नमस्ते दोस्तों, अभिवादन और आप सभी का स्वागत। इस समय इतनी रात को आपको ये शो में लाने का एक ही पर्पस है और वो ये कि कुछ वक़्त पहले अभी खबर आई है कि ईरान ने पाकिस्तान के अपने जो बलूचिस्तान वाला बॉर्डर जो है वहाँ पर जैश-ए-बद्र नाम का एक उनका जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या यूँ कहा जाए कि उनकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो विदिन पाकिस्तान है। उस पर उन्होंने कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए हमले किए हैं, ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया है और वहाँ पर इन हमलों की अभी-अभी कुछ देर पहले ताज़ा खबर आई है। ये आपको ध्यान देना चाहिए कि ये अलबत्त ये जो जैश-ए-बद्र है, बद्र इनका अक्सर यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट होता रहा है बलूचिस्तान बॉर्डर पे ईरान के साथ में, ये लोग हमले यहाँ करते रहे हैं और ये उसी सिलसिले की अगली कड़ी है जिस पर ईरान ने अब अपनी कार्रवाई की है। तो इस पर जो इनसाइट है ये कि ये हमला क्यों हुआ है और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेसिकली पहले तो जो जैश-ए-बद्र है ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इस हमले की बैकग्राउंड क्या है और दरअसल आगे क्या नज़र आ रहा है कि ये सब हो क्यों रहा है? रीज़न क्या है कि ये इस वक़्त हमले किए जा रहे हैं? तो आप याद रखिएगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन जो रेड सी में चल रहा है, ईरान की वहाँ पर अपनी एक अहमियत है। तो उस सारी बैकग्राउंड में आप अब हम बात करेंगे अपने दोस्त राजा मुनीब भाई से और राजा मुनीब भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है शो में और हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त कि आपसे वही दरख्वास्त कि इसकी बैकग्राउंड ये ग्रुप क्या है, इसकी बैकग्राउंड बताएँ और फिर ये कि ये हमला क्या है और इसका फ्यूचर क्या है? बेसिकली ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे कौन है? राजा भाई। Basically, what Iran has essentially done is they have carried out a strike on the headquarters of jaesheadl. jaesheadl है करके है jaesheadl, okay. ADL. जी। तो jaesheadl के headquarters पे उन्होंने strike किया है. Now jaesheadl is basically a Salafist Sunni militant organization which operates from Pakistan. और ये बिल्कुल जैसे लश्कर तोयबा ऑपरेट करती है एज अ सलाफी ऑर्गेनाइजेशन, ये उसी सेम थिंकिंग और सेम माइंडसेट की ऑर्गेनाइजेशन है which basically operates from बलोचिस्तान सिस्तान बलोचिस्तान प्रोविंस में और इसका प्राइमरी टारगेट जो है वो सिस्तान को सिस्तान को ईरान से लिबरेट कराकर बलोचिस्तान में जोड़ने का है. So essentially it's a sectarian organization which has a problem with the Shias of Iran and they have been targeting it since 2012. So 2012 से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम कर रही है. इनका जो पहले जो एक चीफ था वो मारा गया था अफगानिस्तान में. He was killed by the Taliban in Afghanistan also. So even the Afghans are not in favor of Jaesh-e-Adl that much. They took out their previous chief in Afghanistan. And now Iran has basically ईरान ने किया क्या है कि उन्होंने यूनिलैटरल स्ट्राइक्स की हुई है. इसके पीछे रीजन ये है कि पहले स्ट्राइक्स के बारे में बात करते हैं. ये स्ट्राइक्स इसलिए सिग्निफिकेंट है कि ये कोई छोटा हमला नहीं है. बेसिकली ईरानियन मीडिया ने खुद इस चीज को तस्लीम किया है, एक्सेप्ट किया है कि दे हैव यूज्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड ड्रोन्स to target this particular headquarters of Jaesh-e-Adl, which was running out of a mosque in Balochistan. And the Pakistanis did scramble their J-17s from the Saburni base, but वो इसको intercept नहीं कर पाए. The missiles did hit the target. Iran is saying they hit the target. The Pakistani journalists now have started reporting कि नहीं वहाँ पे थोड़ा सा जो है लॉस हुआ है एक मस्जिद को और 2 बच्चे हैं और 4 औरतें हैं उसमें जो मारी गई और जख्मी हुए हैं. तो एज यूजुअल हमने बालाकोट में भी देखा था कि once we hit them and हाँ, पेड़ और कौवे में तो Pakistanis always downplay these issues because at the end of the day क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये बड़ा embarrassing हो जाता है. For the Pakistani army, for the Pakistani establishment, इसका narrative ही ये है कि we are protecting the borders of Pakistan from everywhere, from India, from Pakistani army अपने आप को बड़ा सुप्रीम कहती है. और कुछ दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी जर्नल ने ये बोला था हमारी एयरफोर्स भी जो है वो नंबर 1 है, रोबस्ट एयरफोर्स. तो आज they have failed again. So failed again today.
in preventing the strikes from Iran. But see, it's an action of hostility towards Pakistan. Yeah. Given the relationship of Pakistan with Iran, with the China axis, जी. everybody thought that there is some understanding between the Iranians and the Pakistanis. But the Iranian और ईरान का इसलिए है कि ईरान अगर आप देखेंगे कि जब कासिम सुलेमानी का लास्ट मंथ डेथ एनिवर्सरी थी तो देयर वर टू वेरी पावरफुल ब्लास्ट व्हिच essentially more than 200 people were killed and hundreds were injured, right? So the Iranians are also very wary of the security, of their internal security and the attacks which is happening inside, and they don't want any organization to go carry out these attacks inside Iran. So they're very particular about their internal security at the time when they are deeply invested in Middle East, especially Hamas or Israel conflict. Mein Iran is the primary force behind that. वो मुझे तो जहां तक ये लगता है कि इसमें रीजन ये अच्छा जैश-उल-अदल का ये भी है कि फॉर वेरी लॉन्ग टाइम द इरानियंस वर सेइंग कि इट इज बैक्ड बाय द अमेरिकन्स. द अमेरिकन्स हैव ट्रेन्ड देम एंड बैक्ड देम ईरान के अंदर डिस्टेबलाइज करने के लिए. तो वो भी एक रीजन है. और जो आईएस ने जो एक्सेप्ट किया था ईरान के अंदर की ब्लास्ट हुआ, दे एक्सेप्टेड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट. There was a talk, within the ISIS that ISKP जो है Islamic State of Khorasan province, जो essentially अफगानिस्तान से अफगानिस्तान को अपना बेस कहते हैं, but it's essentially backed by the Pakistanis. There is a Pakistani module of ISKP working inside Afghanistan. So the security, हाँ, तो रीजनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आईएसकेपी को इसलिए बैक किया जा रहा है ताकि तालिबान को जो है वीकन किया जाए और थोड़ा कंट्रोल किया जाए, बिकॉज द इश्यूज बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान हैव bloomed now. So essentially the Pakistani borders, Pakistani challenges that they're not able to make their borders secure. Afghans come and hit them when they want to hit them in KP province and adjoining province. The Taliban literally mocks them. And now the Iranians have taken a strike and have mocked them and taken them by surprise. So what does it mean for Pakistan? It means for Pakistan that as a state, Pakistan is very, very weak when it comes to its own security, when it comes to its own integrity of protecting its own borders and its security. Essentially, anybody can walk into Pakistan, carry out an attack, and go out. It looks like Pakistan has become kind of a new Afghanistan or new Iraq, where any neighboring country can come in and hit them and get out of it. So पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर तो ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं. अब पाकिस्तान की एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेकर भी जो है उतने ही क्वेश्चंस बनते हैं. तो इसके पीछे रीजन ये भी है कि पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान हैज ऑलवेज प्लेड अ डबल गेम. दे प्लेड इट विद यूएस इन अफगानिस्तान. अमेरिका का एलाई बन के अमेरिका को ही छुरी मार रहे थे. तो द इरानियंस वर वेरी स्केप्टिकल कि कहीं ऐसा ना हो कि Pakistanis will allow these jaesheadl guys to carry out large scale attacks inside Iran or on the borders of Balochistan, Sistan, Balochistan, क्योंकि वहां skirmishes होती रहती हैं. Even BLA is the Balochistan Liberation Army के भाई कभी-कभी वहां पर जो है उनके साथ essentially firefight होता है. तो I think Jaesh-e-Adl is a very powerful, very potent force. It's a very organized terror organization. It is not something it is not something which is very weak. And I think the push is coming to shove. For example, मैं आपको बताता हूँ कैसे कि अगर आपको याद होगा अभी इनका वो मुझे नाम भूल गया उस ऑर्गेनाइजेशन का. हाँ, ASWJ जो इनका था, अल सवात वल जमात का जो स्पोक्सपर्सन जो he was assassinated now. Completely a Sunni, hardcore Sunni organization, which was basically, responsible for a lot of sectarian violence in Pakistan. Right? And they exterminated Shias. Basically, they were going after Shias. So I think, somewhere Iran mein wo bhi hoga ki, there could be a retribution towards Shias in their own land from Jaesh-e-Adl kahin par. Because Jaesh-e-Adl was part of that group, that 40 group, which jo unka hai. Essentially. So Jaesh-e-Adl was a member of that. So I think Iranians have proactively carried out a strike in this region because they don't want Jaesh-e-Adl or any other militant organization working out of Pakistan destabilizing, surprising, or carrying out any attacks in Iran. One. Number two, I think it is also regional dominance Iran wants to show in the region. Now it's flexing its muscles across its borders.
thinks that it has a substantial weight in Middle East. Essentially, right now, उन्होंने बॉक डाउन करके रखा हुआ है इसराइलीज को भी एक फाइट में, ह्यूटीज को एक्टिवेट करके रखा हुआ है, साउदीज को इन्वॉल्व करके रखा हुआ है, अमेरिकन को इन्वॉल्व करके रखा हुआ है. So they are just exerting their own muscle on this side of their borders as well by telling Pakistanis that don't even think about colluding with Iran or colluding with Americans in any manner. क्योंकि अगर आप देखेंगे, if you remember, Pakistanis, even the Ukrainian-Russian war, maybe the first day the Imran Khan went there, right? But then the Pakistanis were found to be supporting Ukraine and providing them with mortar shells. Pakistan supplied Ukraine with mortar shells. So Pakistani credibility, it's very low within its own allies also. China doesn't trust them when it comes to Afghanistan because Pakistanis tried to blackmail them by saying, we will keep Afghanis out from the Uyghur region, and they thought they're going to play the game, so they made a deal with directly with Afghan Taliban. Your voice is gone. आपकी आवाज गई. Right, your voice is gone. Wow. May I continue? Because we're still recording. No, you're audible. No, you're audible. Yeah. हाँ, so मैं ये कह रहा था कि am I audible now? Yeah. Yes. Okay, so go ahead. What I was saying is that within the Pakistani allies, the allies of Pakistan don't even trust them. Whether it is China on the Uyghur issue of controlling the militia, the Tajiks and others for not going into China, whether it is Iran, which is concerned about its own borders. So the Pakistanis are not trusted by their own allies. And this is a very significant thing, but as usual, the Pakistani army will play it down and they will say nothing has happened. और वो इलेक्शन लड़ने में ज्यादा बिजी है. Pakistani army basically fights elections and asserts its power basically inside its own country. It's an army which proves its mettle by torturing its own people and dismantling its own institutions. But when it comes to Pakistani state security, they have always failed miserably. Their track record is such of war as well. So I think this is very significant in the region because essentially now the Iranians have put Pakistan in a box. The Afghans already have, put a pressure on. तो उन पे टीटीपी का प्रेशर तो बना ही रहेगा, अफगान तालिबान का प्रेशर तो है ही. अच्छा, Afghans are very vocal about ISKP being operated out of Pakistan. So they want action to them. So I wouldn't be surprised if next action, the Afghan Taliban from across the border come somewhere in Khyber Pakhtunkhwa area and take a camp of ISKP out. They do a strike inside Pakistani territory on an ISKP. अभी तक तो वो नांगाहार के आसपास ही इन्होंने इसको कंटेन करके रखा हुआ है, जहां से essentially ISKP operate करता है, right? But I wouldn't be surprised going forward. Afghans take a cue and say that we need to cross the border and get into Pakistan and be proactive about saving ourselves from ISKP. So it is something which the Pakistanis will really have to think about, because Pakistani के पास option क्या है? They cannot wind down their these organizations, the terror organizations. Essentially they are created by them, right? तो वो अपने जहादियों को तो कर नहीं सकते हैं. अपने जहादियों को reunion करेंगे तो जहादी उन्हीं के पीछे पड़ जाएंगे and essentially they will start eating them up, like the case of TTP we are seeing. So now Pakistanis are in a very difficult stop. They will try to play it down. They will try to play down this issue कि नहीं कुछ नहीं हुआ, या हमारा भी सपोर्ट चाहते थे कि ये ऐसा कुछ हो. But essentially Pakistan has been caught pants down. That's what I would call it. They have again caught pants down, and I don't think they will have any option. Definitely Pakistanis will not go and strike back in Iran. That is not going to happen. Pakistan cannot give an appropriate response, and they will not be, triggering something with Iran, right? But what is Pakistan going to do? I'll tell you what Pakistan does. Pakistan is going to punish its own citizens, which are a minority Shia, by killing them inside Pakistan. Yeah. This is what Pakistan is capable of
doing. This is the only action Pakistanis will do. So I will not be surprised in coming days there is a huge suicide bomb which explodes in a mosque, essentially on a Friday in a Shia-dominated area from Quetta to India, right? And lives are lost. So what Pakistan basically does is it has held it. The sad part about Pakistan is कि इसने अपनी minority को ना hostage रखा हुआ है, and any बिल्कुल action against it uses it represses its own minorities as a retribution, I would say. So that is what they have done with the Hindus in Pakistan, right? They have decimated them the same way. They punish them, they convert them, they rape them, they do all these things. Same thing they do with the Christians. Now, but and the same strange thing they do with Shias. So the Pakistani yeah So the Pakistani response is going to be, a jaesheadl carrying out a suicide bombing, or some organization, Sunni organization, carrying out a suicide bombing or a mass shooting or something of that sort inside Pakistan on the poor Pakistanis who are basically Shias and not Sunnis. But essentially they belong to Pakistan, right? They are going to kill them. So they're going to kill their own citizens. The retribution tell Iran that we are killing, Shias here. So if you don't stop this, we'll kill more. So essentially, this is going to push Pakistan more into the sectarian violence, internal right? strife basically. And sectarian violence, and sectarian strife and sectarian violence for Pakistan at a time when its internal security is already very compromised. It is facing a huge threat from TTP on its borders. I think it's going to destabilize Pakistan more than it's going to destabilize some other country. किसी और का तो ये कुछ कर नहीं सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अपना ही बिगाड़ेंगे, अपने लोगों का बिगाड़ेंगे. And this becomes, then it will become there another plan कि security बड़ी खराब है, हम election नहीं करा सकते, हमारा अपनी गेम चलाते रहेंगे. ये इसमें ना, they will look for an upside into this, that how Pakistani establishment will benefit out of this attack, how we can turn it in our favor, to repress our people more, to be more authoritarian, to take more control of the state, within the state. So because essentially Pakistani army is a state within the state, right? And they want to capture the state outside within the state. So that is essentially what the Pakistanis will do. Yeah, but इनमें एक चीज और है interesting राय भाई कि I'm not sure about today, but yesterday Iranian foreign minister was also in, I think it was Iranian foreign minister. Oh no, or day before. Jaishankar ji was on a visit day before yesterday. 2 दिन हो गए, कल statement आया. Yeah, he was there. Yes. हाँ, ये हुआ. और ईरानियन ऑफिशियल नहीं, अफगान फॉरेन मिनिस्टर वाज इन पाकिस्तान एंड ही वाज विद ऑफिशियल्स एंड सिक्योरिटी एजेंसीज मीटिंग देम यस्टरडे. And it's strange that on the next day, you're getting a hit from Iran, and God knows what is coming next. And secondly, जो instability की बात आपने कही, वो मुझे उस तरह से भी लगती है कि एक तरफ आपका ईरानियन बॉर्डर है जो इनस्टेबल इन हालात में हो रहा है, और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो टीटीपी वाला हाल है, प्लस जो मौलाना की जो विजिट हुई है वहां पर भी जो इन्फॉर्मेशन है वो यही कि दरअसल ही हैज नॉट सक्सीडेड इन परसुइडिंग द फॉर एनीथिंग. टीटीपी वाला जो मेन एजेंडा था, टीटीपी भी उन्होंने मना कर दिया है. उन्होंने कहा कि भाई इट्स योर ओन इंटरनल स्टाफ, और ऑल वी कैन डू इज कि भाई हम तुमको हेल्प कर देते हैं उनसे बात करने में, बट जो सोल्यूशन है वो उनसे डायरेक्टली बात करने में ही है. आप उनसे जाइए, डायरेक्टली बात कराइए विदाउट आर्मी. दिस इज व्हाट तालिबान हैव सेड. आप जाएं, गवर्नमेंट की बात कराएं टीटीपी से, और बीच में से फौज को निकालें, फौज बात ना करे बीच में. फौज का अपना एक है कि भाई हम टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, हम टेरर ऑर्गेनाइजेशन से बात नहीं करेंगे. नाउ क्वेश्चन इज कि इनको बनाया किसने, वो एक अलग मुद्दा है. सारे तालिबान को तुमने पाकिस्तानी आर्मी खुद एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है. बिल्कुल बिल्कुल. Within their ranks, they've been acting like mercenaries for a very long time. चाहे कोई जरूरत वहाँ में हो जियाउल हक के टाइम पर, या आप बाद में देख लें कि अमेरिकन के लिए आप मर्सनरीज का काम करते रहे, चाहे तालिबान बनाने का था या उनके साथ में लड़ने का था, एवरीवेयर. एंड देन अगेन उन्हीं तालिबान को जिनको आपने बनाया था, उनको उन्हीं अमेरिकन के कहने पर जिन्होंने बनवाया था आपसे, आप उनको मारने भी पहुंच जाते हैं. 5-5 हजार रुपए में एक अफगान को पकड़ के आप उनको देते हैं. तो 5,000 डॉलर क्या Pakistani army की तो reputation is as a mercenary force. ना, in the Middle East also they fight on money on behalf of anybody.
It's always been बिल्कुल the ऐसे case. जब वो योम किपुर वॉर के बाद जॉर्डन में क्या हुआ था, जॉर्डन में भी पाकिस्तानी आर्मी ने पैलेस्टीनियंस को मारा था, 20,000 पैलेस्टीनियन मारे थे ज़ियाउल हक ने, तो वही ये जब ये वाले टाइम पे बिल्कुल बिल्कुल मर्द मोमिन। बेसिकली हायरिंग फोर्स, दे आर हायरिंग फोर्स। बिल्कुल। बट यू नो 3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आपने जयशंकर जी की बात की, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की। हम्म Before that, before you know the Afghan this Maulana going to Afghanistan, the NSA of Iran was in Pakistan. So आहा yeah, so the NSA of Iran had come to Pakistan. They had had a dialogue. So what I'm assuming is that they would have asked them to, you know, shut down this camp. The Pakistanis, as usual, are not in a position to shut down any camp. It's a Frankenstein monsters they have everywhere, and they cannot ring them in. So I या think इसका वही है कि इसके जो multitude of effects हैं वो है. And you know, yes, the Indian foreign minister was there, but I don't think that India, you know, Iran would carry out an attack in Pakistan saying on India's instructions. I नॉट don't think something like नॉट that has happened, नो right? So it's द it's a लार्जर एजेंडा दैट coincidence. वी टुक अलोंग बिल्कुल। It's a coincidence. It's mostly a coincidence, and that's how I see it. So you know, he was there yesterday. The Iranians took it out today. So you know, they was also must be waiting. Ki, when the foreign minister leaves, you have to take care of Pakistan. So they are taking care of Pakistan today. But essentially, it's bad time for Pakistanis. It's really hard time. I think you know, I don't know if the Pakistanis civilians will ask their government the questions they need to ask. That you know, when are you going to make our borders secure? But apart from that, I see very hard time for Pakistan. I wouldn't be surprised Taliban carries out a strike. What we call surgical strike, जो हमारी language में surgical strike है. So आज ईरान ने strike किया. I'm pretty sure now the Afghans will come across the border and hit a ISKP camp and say कि हमने भी surgical strike किया. ठीक So बात Pakistan है। is getting all these surgeries from its neighbors to remove their, the cancer they have grown within. It's the neighbors which are coming and carrying out these surgeries within Pakistan. प्रिसाइसली बिकॉज़ उनकी अपनी जो आर्मी है वो कैसे कर सकती है? वो तो बेचारी खेती करने में बिज़ी है। वो इस समय 45,000 एकड़ लेकर बैठी है, वापस को एग्रीकल्चर कर रही है। वो बेचारे अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं. For them the इलेक्शन priority is election. So तो that वो they are preoccupied right now, too much. I mean, it's strange कि वो अभी कल में वो नवाज शरीफ से, मरीम नवाज से बातें हो रही हैं, तो वो बता रहे हैं कि भाई अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बताइए। उनका सोची नहीं, जल्दी से सोच के आइए, आप गवर्नमेंट में आने का वेट थोड़ी करेंगे। तो वो अब भागे भागे गए। कल उन्होंने फिर इकोनॉमिक एक्सपर्ट से अपनी बात करनी की शुरू की है नवाज शरीफ ने। आप जरा इमेजिन कीजिए। this is the intellectual bankruptcy of Pakistani elites. No, this is the bankrupt. This tells you the intellectual bankruptcy of Pakistani politicians as well. उनके लिए economic. I told you, Pakistanis, for Pakistani politician or establishment, whether it is the army or the politician there, their priority is never Pakistan. Their priority is their own power. Pakistan is a platform to the common Pakistani. आपने राजा भाई एक पॉइंट और आपने जो रेज किया है ना, बेसिकली आई हैव बीन ऑफ लेट आई वाज थिंकिंग अबाउट इट इन द सेंस कि आप ये देखिए कि जो आपने कहा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट है। इन द सेंस आप याद कीजिए 99 जब कारगिल हुआ था और जब ये बात उठी थी कि भाई whether Nawaz Sharif was informed about it or not. Now, some say in army that he was informed, he says I was not. और बाद में अगर आप एक इंटरव्यू देखिए बड़ा खूबसूरत उन्होंने किया है जमशेद कियानी का इंटरव्यू। ही इज नो मोर, जमशेद कियानी इज एक्सपायर्ड, बट जमशेद कियानी का एक इंटरव्यू है, एक ही इंटरव्यू है उनका जो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। और ही वाज उन्होंने वो ब्रीफिंग दी थी नवाज शरीफ को, और बेसिकली उनके उसमें बात आती है सामने कि बदमाशी उन्होंने ये की थी फौजियों ने कि जो एलओसी की लाइन है वो हटा दी थी। अब जरा इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी देखिए, उसको यही नहीं मालूम है कि पाकिस्तान का नक्शा कैसा लगता है। मैं वही आपसे कह रहा हूं, did not know where the boundaries are, so they simply kept telling him on the map हम यहाँ पहुंचे हुए, यहाँ पहुंचे हुए, and it's only and ये सारे मुजाहिदीन हैं। एंड इट्स उनका जो वो फॉरेन मिनिस्टर थे सरताज अजीज साहब थे उस समय फॉरेन मिनिस्टर, वो भी उस ब्रीफिंग में मौजूद थे। एंड ही कम्स डाउन विद नवाज शरीफ एंड उनकी कार में ही, उन्हीं की कार में बैठ के नवाज शरीफ के साथ में जा रहे थे। और वो कार में उनसे कहते हैं कि मियां साहब आप जानते हो ये दरअसल हमारे अपने लोग हैं, मुजाहिदीन नहीं है।
and that is when he gets panicky and says कि ये तो LOC पार कर गए. That में next day वो again उनको बुलाते हैं और फिर briefing के लिए बुलाते हैं और फिर चीजें को खुलनी शुरू होती हैं कि भाई वो तो, and then you have no other option because आपके जो लोग हैं वो already LOC पार करके दूसरी तरफ जा चुके हैं, LOC क्रॉस हो चुकी है. And that is when he asks इसको मुशर्रफ को कि आप हमें कश्मीर लेकर कब दे रहे हैं, you know. If you're so confident of yourself कि ये सब सक्सेस हो जाएगा तो कब दे रहे हैं कश्मीर लेकर. It's crazy, but what I wanted to underline was कि ये जो जिस इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी की आप बात कर रहे हैं, वो देखिए, आप ये देखिए कि इलेक्शन आ रहा है, 8 फरवरी को इलेक्शन है. आज आप खड़े हुए 15 जनवरी पर और 8 फरवरी को इलेक्शन है. 14 जनवरी तक, 14-15 जनवरी को गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी. आपके पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है. There is no economic plan. करना भी क्या इकोनॉमिक प्लान? वो इकोनॉमिक प्लान की इनको जरूरत नहीं है बेसिकली, यू नो, बिकॉज दे हैव नेवर वर्कड ऑन देयर इकोनॉमी. कभी पाकिस्तान, आप, मैं वही तो कह रहा हूँ, कभी भी किसी भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो उठा के देख ले, नो पाकिस्तानी politicians manifesto will ever talk about economy. They don't care about it. Yes, and in the name of development, all they did was कि सड़क बना दो, फ्लाईओवर बना दो, and this is it. यही, and all this because it is completed within 5 years, and you can ask for, you know, votes on the basis of this. Because that is essentially what Pakistani politician can do. He can only build roads and provide water. Rest all is in Pakistani army's hand, right? And army is busy running every other institution except the institution which is essentially army. Built to run. I mean, that is what Pakistan is, and that is what defines Pakistan of today. I mean, I don't think, you know, Ziaulhaq will be turning in his grave thinking ki what have these army journals done to Pakistan ki this aise din dekhne ko mil gaya humko ki, you know, ye hamara haal ho gaya. So I think this he wanted the bomb and he wanted the Pakistanis to eat grass. So Pakistanis will eventually eat grass and, you know, will have no other option. But saying that, yeah, I mean, look, I don't see any reaction from Pakistan coming. They are going to say नहीं वो एक पटाखा फटा था या एक हो गया था और हमारी औरत, हाँ, 4 कबूल मर गए थे, 2 पेड़ गिर गए थे. They will make their journalists speak the tune what they want to speak. They will, you know, there will not be any retaliation. The retaliation will be within Pakistan, on Pakistan's own people, which are a Shia population. वही वो करेंगे कि वो कुछ नहीं करते. बिल्कुल. That is what Pakistanis will do. That is what the reaction will be. Okay. Thank you so much, Bhai, for this update, and I hope viewers would like it, and do like and share this video, and subscribe to the channel, and let me know what you think about this video in your comments. Thank you very much for now. Bye bye, sahab. Good night.